run. You have to use maybe stones, bricks, whatever is there. That is, you have to be very observant in life. And another thing, you should avoid lonely roads. Why would you like to go on a lonely road? So these are the small things which you have to do. But I must tell you this: have confidence in yourself, because trust me, even 4-5 guys will have lesser confidence than you. Alright? Once I was having a, like I was just kind of fighting with my sister. Ignore. So once I was about to kick her, so she held my legs and she was quite away from me. So that time what could I have done? आज इनका ग्रेजुएशन डे है, आज इनको इनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक लड़की का मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि इनके अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज के ज़माने में मैं तो यही चाहता था कि लड़कियाँ कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इनको कभी ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज इट शुड बी अ कंट्री वेयर गर्ल्स कैन वॉक अराउंड फ्री, बट देर आर सम फ्यू एलिमेंट्स, सम पीपल जिनकी वजह से आज इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एंड इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ शेम, but it's an essential thing. It is something that is definitely growing a lot of attention, and I think you guys can all agree that you're so happy that there's a place that you can come to. I myself know nothing about self-defense, which is why this is really inspiring me that you guys have come here and you've taken the initiative to protect yourselves and become stronger. And I think, like you had said, it's about confidence. I think because we aren't aware of our physical ability, we're not very confident about how to approach situations, and that can of course only come through strength and learning the art and the techniques of self-defense. So I'm really great. I'm so glad that you guys have inspired more girls to come here and learn, and I myself will be one of them. Oh, they're demonstrating something. Woo! देखिए ये आज इन लोगों का दिन है। Any questions to them? They should share stories. Request you guys. नाही एक मिनिट, तुम्ही जर ह्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारले नाहीत ना, हे ऑलरेडी ट्रेंड आहे, तुम्हाला बाजूला घेतील नंतर। Well, बहुत मज़ा आया आज देख के कि they told us their stories कि कैसे जब एक सिचुएशन में होते हैं जहाँ उनको डर लगता है, वहाँ पे अब इनको इस वर्कशॉप के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने सबके पास देखा एक चाबी है और एक विसल है, तो जब हाथ मिलाओ तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप एक कैसे चाबी को वेपन यूज़ कर सकते हैं और सीटी अगर आप चिल्ला नहीं सकते। So these are very practical and small tricks that you can use that they feel safe in Mumbai, and I think it's commendable that both of them are initiating this, and as you can see how excited and confident they are today. So hopefully ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ ट्रेनिंग करेंगी और लड़के डरेंगे या उल्टा हो जाएगा कुछ सालों में। तो yeah, it's a great endeavor and hats off to them. 3000 मुली अपन ट्रेन केलं, 3000 so far. मैंने कोई टिप्स लिए ना, मैं भी अपनी चाबी लेके ऐसे घूम रहा हूँ। Can you guys give me some self-defense tips? Anything? Because Who wants to talk about self-defense? any tip.